Good evening, ladies and gentlemen. We are going to start the session shortly. Thank you for your patience. So, good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining for monthly rollover report. We have with us Mr. Manoj Vyala and Mr. Gaurav Arora from Religare Research. I would like to invite Manoj to start the session. Manoj, over to you. Thank you, Suraj, and a very warm welcome to everyone on this monthly rollover webinar that we have. So, guys, I'll try to talk in Hindi and English as well because that has been the request for the while. So, ये सेमिनार, ये वेबिनार जो होगा वो प्राइमरली 2 पार्ट्स में होगा. एक में जहाँ पे हम इंडेक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में और क्या स्ट्रेटेजी करना चाहिए आपके लिए फॉर द अगस्त सीरीज, और सेकंड हाफ में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. तो पर्टेनिंग टू ये वेबिनार या तो ये जो प्रेजेंटेशन है उसको लेके ही वी विल बी डिस्कसिंग. इट वुड नॉट बी अ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसर, इट वुड बी index specific and more prescribed to the sectors and the rationale that we have for the month of August. So without wasting time, let me start. So I'll share my screen here wherein there is a presentation. I hope everyone can see this. Yes. 1 second, I'll just share, I guess. Yeah, just give me a yeah. So to start the series, what we usually do is every time we get into an objective analysis, यहाँ पे हम लोग objectively ये देखते हैं कि जुलाई सीरीज में क्या हुआ था. जुलाई सीरीज में जो पोजीशनिंग थे क्या वो अगस्त में कैरी हुआ है या तो अगस्त में कोई फ्रेश पोजीशन हुआ है और उसका प्रोजेक्शन क्या होगा इन द शॉर्ट टर्म. तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहले I have always said a simple way and the easiest way to understand derivative is by positioning. Positioning का मतलब ये होता है आप मार्केट में तेजी हो excuse me, तेजी हो या मंदी हो, अगर अमाउंट ऑफ पोजीशन जो इंस्ट्रूमेंट में कैरी किया वो ज्यादा होता है तो वो ट्रेंड में स्ट्रेंथ होता है. तो इन दिस केस अगर आप देखो कि पिछले 30 to 40 days, at least in the last 30 to 40 days, the Nifty has rallied right from 18,900 to almost 1,000 odd points to 20,000. और इस लास्ट 30 से 35 ट्रेडिंग सेशन में जो पोजीशनिंग निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स में था और उसमें से कितना निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स में आया है, दैट विल हेल्प अस डिक्टेट. तो जब हमने जुलाई सीरीज स्टार्ट किया था, व्हेन वी स्टार्टेड द जुलाई सीरीज, द निफ्टी पोजीशन इफ यू कैन सी वेयर अराउंड 91 lakhs. दैट मींस द ओपन इंटरेस्ट of the positions of Nifty July were at 91 lakhs, and now when we started this morning, this new series of August, we are at 1 crore 17 lakhs or 117 lakhs. तो इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन तकरीबन 20 से 25 लाख ज्यादा पोजीशन जो है वो अगस्त फ्यूचर में है विद रिस्पेक्ट टू जुलाई. अभी इसको थोड़ा समझने के लिए विल डाइव डीप इनटू इट. मार्केट का मोर देन 50 to 55% जो एक्टिविटी होता है वो एफआई डेस्क से होता है. एफआईज आर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स. तो उनका फेवरेट है, उनका जो मेजर इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं वो है इंडेक्स फ्यूचर्स. इंडेक्स फ्यूचर्स में प्राइमरली आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी
These are the major primarily which comes in, but Nifty and Bank Nifty would constitute the major part. तो बोलने का मतलब एफआईएस का लॉन्ग पोजीशन जो जुलाई मंथ में था दैट वाज क्लोज टू 66% और अभी अगस्त में तकरीबन 59% है, तो थोड़ा लॉन्ग पोजीशंस कम है 5%, दैट इज गुड। उसका मतलब क्या है कि शॉर्ट पोजीशंस थोड़ा ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू जुलाई। तो सिंपल वन लाइनर टू ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग इज we are starting July on a much more cautious note with respect to July, yani excuse me, FIs are a bit cautious, at least with respect to July, where they had 66-67% of long index futures. Now they are started with 59%. The second part is August is higher in terms of positioning, which is 117 odd lakhs. अभी अगर आप एक्सपायरी के 4 दिन पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एटलीस्ट प्रिसाइसली द लास्ट 3 दिन भी अगर आप ध्यान से देखो तो एफआईआर फिगर्स में काफी इंडेक्स फ्यूचर्स सेल भी था और एक आध दिन वी हैड अ पॉजिटिव फिगर। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ short position into August as well as some long position into August. So FIs are not unidirectionally trading in this market. तो जो August series है वो एक ही साइड के ट्रेड से नहीं है, जहां पे तकरीबन मोर देन 30-40% शॉर्ट पोजीशंस है। और वन इंपॉर्टेंट थिंग इज एफआईआर शॉर्ट इंडेक्स को गिराने के लिए नहीं करते, रादर उनका जो शॉर्टिंग निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी में होता है वो उनका जो कैश पोजीशन और स्टॉक पोजीशन जो रिलेवेंट इंडेक्स में होता है उसको हेज करने के लिए किया जाता है। सो एफआईआर्स हैव ऑलवेज बीन यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर शॉर्टिंग एज अ गुड नॉर्म, और जो एवरेज होता है वो तकरीबन 60% होता है। तो अराउंड 50-60% शॉर्टिंग ऑफ एनी इंडेक्स फ्यूचर इन एनी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज अ वेरी एवरेज थिंग। So the good thing is with the VIX at 10.5% and a mix of long combination and a cautious short positions in Nifty, this is how the August series has started. Now if they have shorted, obviously there is some concern to the downside. तो जैसे मैंने कहा कि निफ्टी तकरीबन 1000 और it has actually rallied almost 1000 odd points in the last, let's say sorry, 2 to 3 odd months. So this gives us a support of somewhere close to 19,300 to 350. So what we are trying to say is 19,700 ये पिवट है अगस्त सीरीज का। पिवट का मतलब होता है कि 19,700 के ऊपर निफ्टी तेजी के साइड में होगा, यानी इट वुड बी पॉजिटिवली बायस, एंड बिलो 19,700 निफ्टी में थोड़ा कॉशियसनेस होगा, या तो थोड़ा सेल ऑन राइज एटीट्यूड और सेंटिमेंट कैन हैपन। नाउ दिस फॉल दैट व्हिच माइट कम इनटू द ऑगस्ट सीरीज we feel might get arrested or might find a support closer to 90,300 or 350. So this 117 lakhs, this is how the positioning for this 1.17 crores of Nifty August futures is here as of now, and FIs are conveniently hedged, which is a good indication for the market. So the positional trend in the market is still positive. We are still on buy on dips, and the dip would qualify as a 19,300 for August series. This is the entire August series I'm talking about. Now the second instrument that the FIs usually use is the index option. So index option में जनरली क्या होता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो होता है वहां पे एक सेलिंग का एक्यूमुलेशन माना जाता है। तो इस इन दिस केस 19,000 स्ट्राइक पुट ऑप्शन में तकरीबन 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट 20,000 स्ट्राइक जो है कॉल ऑप्शन में उसमें तकरीबन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज द डेटा व्हेन वी स्टार्टेड दिस डे. So almost Nifty, that 1,000 odd points is more or less the range where the option data is expecting the index to be. Obviously, option data contracts the amount of position जो है वो काफी मायने रखता है। यहाँ पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कम से कम 80,000 से 1 लाख होता है। तो उस वक्त पे ये प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है तो वी वुड सी इन द नेक्स्ट 3 to 5 odd days this position would start going up. So these two instruments, which is your index futures and index options, says that unlike last time, this time there can be a bit caution and a dip can be expected closer to 19,300 as per futures and 19,000 as per index option, and the upside might be 20,000 as per the index option positioning and 20,200 to 20,300 as per the index future position that the FIs are. And stock specific, there are 4 stocks that we like.
that we feel that these stocks have not only seen cash position in the last 3 to 5 odd session, but also good amount of derivative position. So the rationale here is when any mutual fund or when any prop desk or when big players make position into a stock, they do not simply buy a future or a delivery. They use the track of fresh arbitrage. Fresh arbitrage is when you buy in the cash market and you short some position into the stock future to hedge the position. So when you see fresh arbitrage in any stocks of particular sector, generally the stock outperforms the index in the next 1 to 2 months. So we feel Lupin, ACC, Ambuja Cement, MCX, and Escorts. These are the 5 stocks that we feel can outperform for this month of August. Now, Ambuja Cement also is the stock of the month. We have already released a report wherein around 14% odd is the target, where Gaurav will also share some more details on that. Now, before we go to that, let's go to the second part of the index, which is a Bank Nifty. Excuse me. तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए तो जुलाई सीरीज में जो था बैंक निफ्टी तकरीबन 22 लाख के ओपन इंटरेस्ट से था, और अगस्त में अभी जो सीरीज आज स्टार्ट हुआ उसमें तकरीबन 18.5 था. तो निफ्टी लास्ट मंथ ऑफ जुलाई 3.5% चला, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 3.5% चला. तो बैंक निफ्टी हैज नॉट आउट परफॉर्म, बट द गुड थिंग इज इट इज नॉट इवन अंडर परफॉर्म द निफ्टी. तो 3.5% जो निफ्टी चला है, बैंक निफ्टी भी साथ साथ चला है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगस्त सीरीज में भी बैंक निफ्टी के साथ ही चलेगा, कोई अंडर परफॉर्मेंस या मेजर ओवर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस नहीं होगा. अभी यहाँ पे कैच क्या है, अगर आप देखिए कि जुलाई सीरीज में बैंक निफ्टी, अगर आपको याद होगा लास्ट 20-25 दिन पहले बैंक निफ्टी में देयर वाज सुपर बुलिशनेस एंड द इंडेक्स हैड रैलीड अ गुड 1400 to 1800 ऑड पॉइंट, एंड दैट हैपेंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. तो उस वक्त पे काफी पोजीशन बना था जुलाई सीरीज में. तो तकरीबन जुलाई का पीक जो था वो यही 22 लाख के आसपास था. उसमें से लास्ट 4 से 5 दिन में जब भी बैंक निफ्टी में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं था, तो थोड़े बहुत शॉर्टिंग और स्क्वेयरिंग ऑफ हुए हैं. So that is why we feel ये जो 4 लाख कम है जिस जो अगस्त सीरीज स्टार्ट किया है, we are seeing this 4 lakhs of lesser position with respect to July. That is majorly because of that short positions which might not be rolled from July to August. So we still feel Bank Nifty is not really an underperformer, but yes, there is some lack of participation. Eventually that might catch up, and once it does, we are expecting it to be at par with what the Nifty would be doing for this series. ऑप्शन वाइज अगर आप देखिए तो 43,000 स्ट्राइक में है, जहां पे पुट एक्यूमुलेशन हाईएस्ट है, और तकरीबन 46,000. तो दिस 3,000 ऑड पॉइंट्स इज वेयर द इंडेक्स ऑप्शन और द बैंक निफ्टी ऑप्शन सेज दैट इट माइट बी ट्रेडिंग इन. So to sum it up, बैंक निफ्टी में as of now निफ्टी with respect to निफ्टी positions कम है, और थोड़ा buy on dips is possible. बैंक निफ्टी is been underperforming even in today's trade अगर आप देखो, but that doesn't mean that we are expecting it to underperform the entire month of August. Eventually we are expecting बैंक निफ्टी to catch up and be at par with the nifty. So this would be the major two understanding or projection that we have excuse me, for the indices. Now second thing is sector. Now obviously nifty में index management और sector management एक concept होता है. management का मतलब ये होता है कि there are certain sectors which looks better in terms of investment opportunity. तो उस sector में काफी थोड़ा ज्यादा पैसा आता है with respect to other sector. तो अगर आपको लास्ट 1-2 महीने पहले भी हमने जब वेबिनार दिस रोलओवर वेबिनार किया था, दैट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेटल एंड आईटी एज ए सेक्टर. उनका पूरे मार्केट में जितना ओपन इंटरेस्ट है स्टॉक्स का, उस वेटेज से अगर देखे जाएगा तो उस टाइम मेटल का काफी लो था, 3.5% के आसपास था. आईटी भी तकरीबन 3 से 4 था, वो अभी बढ़कर तकरीबन 5.2% हो गया. सो दिस इज वन इंडिकेशन दैट वी सी. सो इवन इन दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट we believe that FMCG as a sector, cement as a sector, these are the two sectors which would do positive. But positioning wise also if we see तो textile, cement and autos, these are the top 3 जहाँ पे percentage rollover हुआ है. यानी जुलाई के जो स्टॉक फ्यूचर्स थे वो अगस्त में इन तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा रोल हुआ है या तो पोजीशन बना हुआ है. और जो कम हुआ है, जो which are doing the least is realty.
रियल्टी में 83% इन रियल्टी, 85 मीडिया में, और आईटी में थोड़ा 87% के आसपास है. So we believe that more or less after the results have come for Infosys and all, we have seen some shying away of positioning, and that is why we have seen some lesser positioning into the IT series. But then net अगर आप देखो with respect to last month, finance, FMCG and cement along with some automobile, these would be the sectors जहाँ पे पिछले महीने with respect to last month the amount of position is better. So we are expecting these sectors to do positive. Now I will hand over the call to Gaurav, will give you cues or he'll explain more about the stock futures that we have. Thank you, sir. Hello, everyone. So, sir has shared his view on the indices. So, with uncertainty or at such high levels, where risk was not favorable, stock selection would be the key. So, we have boiled down 4 stocks which we believe that can outperform the benchmark. First, we have is Lupin from the pharma space. As mentioned, cement, pharma, and FMCG are the sectors that we believe can do well in the August series. So keeping that in mind, it's Lupin that we like. Why we like this stock? Because the stock has gained over 10% in July series with decline of open interest, implying short covering. So, with good cash-based buying was also visible in the stock, which was at average price of 946 to 950. So we anticipate the stock doing well in the August series. So we believe the stock is positively biased and we vow to stay positive in the stock for the next month, that is August series, in the range of 920 to 1100. So this was the first stock. And next we have is from the cement space, which is our pick of the month as well. So we have recommended Ambuja Cement. So clients looking for 10 to 12% returns in a month can look for the stock with a time horizon of 1 month. Earlier we had given Sun Pharma as a pick of the month, and now we have given Ambuja Cement. Why we like this stock? Because the stock has been doing good from last 2 series after making lows around 350 levels. In July series, it gained 4% with addition of 15% open interest. So that indicates these are long formation. And the good part is the long formation are being rolled at around 97%, the rollovers which we have seen in last 3 days of expiry. So we anticipate follow-up buying in the stock based on good cash-based buying and derivatives activity. So one should be positive in Ambuja Cement with a stop loss at 410, that is 410. So this was our pick of the month, mind you. So clients have looking for 10 to 12% return can look for this stock, Ambuja Cement, a must-have stock in the portfolio. And next we have is MCX. The stock did not do much on expiry to expiry basis, but what we have seen is it witnessed a humongous rally of around 13% from the July lows. And the surge in price was accompanied by the addition of significant open interest. So the surge was to the tune of 118%. 118% means the open interest almost or doubled, more than doubled, with significant cash-based buying. So one can look for buying near the supports of around 1640 to 1600 odd levels for a target. We have revised our target since the stock had done well in today's session. So the target has been revised upward to 1800. And last we have escorts from auto space. Though the sector has run up a lot, we believe still there is steam left in this counter, that is escorts. So it's prudent to be selective in auto space since we have seen a good run up, be it Maruti, be it Eicher Motors, be it M&M, be it escorts, everything. So escorts is something that we believe there is still steam left in the stock. So the stock has added around 12% in price in the July series and witnessed higher derivative positioning in August as to the tune of 55%. So we anticipate holding 2420 levels as a support. Escorts has the potential to test 2650 levels in the August series. So मोटा मोटी ये 4 स्टॉक हैं as of now जो हमने boil down करे हैं. First है Lupin, second Ambuja Cement, third MCX, and fourth Escorts.
So with markets are at such high level, so it's prudent to be stock specific. आपको stock specific रहना जरूरी क्यों है? क्योंकि risk reward हर एक stock ऐसा नहीं है ये कि अब आपको इस particular level पे सब stocks अच्छे returns नहीं देंगे. So you have to select some stocks जो आपको यहाँ से भी अच्छा रन दे पाए. So we believe कि यहाँ से ये 4 stocks रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की. So yes, with that I hand the call back to Manoj sir. थैंक्स गौरव. तो इसमें इन चारों स्टॉक्स में नेसेसिटी ये है, इवन द स्टॉक पिक ऑफ द मंथ, ये सब पोजीशन जो है वो आपको डिलीवरी बेस्ड या तो कैश पोजीशन में लेना है और आपको स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक कम से कम 2 या 3% का मूवमेंट अपसाइड दे चुका है. तो यहाँ पे भी कैश पोजीशन या डिलीवरी बेस्ड बाइंग, यू नो, दिस इनिशिएटिव इज टू पुश कैश बाइंग इनटू स्टॉक्स और क्लाइंट्स हु आर लुकिंग फॉर दिस सीरीज. एंड जब भी सीरीज स्टार्ट होता है उस वक्त पे अगर पोजीशन बनाया जाता है तो जनरली दैट गिव्स अ गुड फॉलो अप बाइंग. तो इन चारों स्टॉक में, दैट इज योर MCX, Escorts, Ambuja Cement, which will the stock pick of the month, and Lupin. These star stocks may be recommend taking delivery based buying even on Monday and to hold in for the August series where we are expecting an outperformance on these stock. The next is excuse me, on index निफ्टी में हम ये देख रहे हैं कि पूरे मंथ जो अगस्त का एक्सपायरी है वो काफी इट्स अ बिग मंथ ऑन अगस्त. आई गेस 31st August इज वेयर वी हैव द एक्सपायरी. तो यहाँ तो डेट कैलेंडर वाइज इवन अगस्त इज नॉट स्टार्टेड एंड वी हैव अ गुड 31 प्लस ऑलमोस्ट 3 odd days more, so it's a good 35 day month. तो यहाँ पे हमने तो जो प्रीमियम देखा है एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम वो तकरीबन 515 पॉइंट्स और 515 प्रीमियम का है. तो द बेटर स्ट्रेटजी 515 पॉइंट एट 19650 क्या होता है कि 19,000 से लेके 20,000 मोटा मोटी इट कवर्स दैट. क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ दिस वेबिनार में हमने वी मेंशन दैट इंडेक्स ऑप्शन डेटा बता रहा है कि 19,000 का सपोर्ट रहेगा, फ्यूचर्स के हिसाब से 19,300 तक का अच्छा सपोर्ट होता है और अपसाइड 20,000 या 20,200 के आसपास. सो इस ब्रॉडर रेंज को कवर करने के लिए एट द मनी यानी 19,650 मंथ एंड 31st August कॉल और पुट ऑप्शन आपको बेचना है. तकरीबन यू सेल इट फॉर ऑलमोस्ट 515 रुपीज. एंड बिकॉज सेलिंग ऑप्शन हम प्लेन नेकेड नहीं करते तो इसको हेज करते हैं. हेज करते हुए हमने 19,100 पुट ऑप्शन खरीदा है 65 रुपीज में और इसके सामने हमने 20,200 कॉल ऑप्शन भी खरीदा हुआ 70 रुपीज में. तो नेट स्ट्रेटेजी जो होता है वो 375 रुपीज का हो जाता है. इसमें स्टॉप लॉस 475 तक रहेगा और इसका टारगेट जो होगा तकरीबन 200 रुपया. सो बोलने का मतलब है कि 19,650 प्लस और माइनस 375 या 400 रुपीज. तो मैक्सिमम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी अगस्त सीरीज टू बी इन अ 19, लेट्स से 250 and almost 19,950 or 20,000. This would be the maximum range that we are expecting. I guess the margin needed for this is around 1 to 1.25 odd lakhs, but this can be done because this can be a good returns on the investment, because at least after the first 10 to 15 odd days generally ऐसे strategy में, this is called a short and fat, ये strategy में जो reward distribution कैसे होता है मैं I'll just try and explain. अभी आपने 375 रुपये में ये स्ट्रैटेजी मंडे को आपके क्लाइंट ने कर लिया एक एक लॉट, ये चारों लेग्स एक्सक्यूज मी, और तकरीबन 1.25 लाख का मार्जिन लग गया. तो जैसे अगस्त 7 पहला एक्सपायरी है आपका अगस्त 3 तारीख को, तो अगस्त 3 तारीख तक इसमें मोटा मोटी ज्यादा फर्क नहीं होगा, कुछ 6 से 8 रुपए का डिफरेंस ही होगा, क्योंकि जो कॉल बेच के जो कमा रहे हैं वो बाइंग में कम हो जाएगा. तो इट विल मोर और लेस ऑफसेट. बट जैसे ही अगस्त 12 जो आपका सेकेंड वीकली एक्सपायरी के बाद आप यू नो व्हेन द स्ट्रेटजी स्टार्ट्स गोइंग बियॉन्ड दैट सेकेंड वीकली एक्सपायरी, this 375 rupees which has a target of 20, that is we are expecting 175 rupees profit, it will start giving you 25 to 28 rupees profit per week. So at least by the 15th to 20th we are expecting this to be somewhere close to 280 to maybe a 290 odd rupees. So that first 80 to 90, 100 odd gush would come in close to the August first fortnight, and eventually after that obviously there will be new movement in the Nifty, and if the Nifty is still in the same at the money strikes of let's say 19,500 to 600, this strategy can be continued. Else it is advisable that we shift it
to a next strike towards the next expiry. So as of now आप ये कीजिए, मंडे को क्लाइंट्स को भी बोलिए कि दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी जहां पे 1000 पॉइंट्स का निफ्टी कवर किया गया है और हमने कॉलर पुट ऑप्शन बाहर खरीदे भी है, तो ये वन साइडेड या तो ऑप्शन सेलिंग जैसा हाई रिस्क स्ट्रैटेजी नहीं है। हमने स्ट्रैडल यानी एट द मनी स्ट्राइक्स के कॉलर पुट को बेचा है, बट उसको हेज करने के लिए उसके ब्रेक इवन पॉइंट्स के कॉलर पुट ऑप्शन को भी खरीदा हुआ है। और तकरीबन इसमें पहला 80 से 90-100 रुपए जो आएगा वो आपको फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अगस्त तक है ना, क्लोजर टू 15 to 21, दैट इज वेयर यू स्टार्ट गेटिंग इट। और उसके बाद इवेंचुअली दिस excuse me, उसके बाद eventually this starts coming down and we can garner a profit of close to 150 to 175 rupees. So guys, so let me just underline the entire crux is FIs ने इस मंथ में पिछले मंथ से ज्यादा थोड़ा कॉशियसली मंथ स्टार्ट किया है। उन्होंने शॉर्ट पोजीशन थोड़ा निफ्टी में ज्यादा रखा है, जो काफी ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं है, बट इट इज 5 to 8% मोर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी सॉ इन जुलाई। पोजीशन निफ्टी में जो है वो तकरीबन 25 लाख ज्यादा है, क्योंकि वो हेज करने के लिए जो कैश पोजीशन जो लिया हुआ है, जो निफ्टी 1000 पॉइंट जो पिछले 2-3 महीने में रैली किया है उसमें जो वैल्यू बढ़ा है स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में, तो उसको हेज करने के लिए दिस पोजीशन हैज बीन टेकन। बैंक निफ्टी में फिलहाल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी कम है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू इवेंचुअली कैच अप। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, तो निफ्टी के 2 or 3% पॉजिटिव होने पे वी आर एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी आल्सो टू बी अ 2 or 3% पॉजिटिव, दैट इज इट विल बी एट par with the nifty. We are not expecting underperformance, neither outperformance. Stock specific, we like 4 stocks wherein Lupin, Ambuja Cement, MCX and Escorts is what we recommend to buy in delivery. Do not go for stock futures. And index specific ye jo strategy hai short and flat, this can be recommended to the clients. Make them explain that the first 80 to 110 odd rupees would come post the August 15. This is a stable strategy to do, wherein आपने strategy कर दिया तो this will automatically start taking and start making money for you, and we need not, unlike a buy option or a straddle that we do, we need not have to keep on tweaking it. So at least the first 15 to 20 odd days, it's a good hedge which should be done, and this money can be deployed. The immediate reward from this 375 rupees strategy would be a 75 to 90 100 odd rupees, and then eventually this can go up to a 150 170 odd rupees. So more or less, this is the expectation that we have in terms of index stocks and the volatility along with the strategy that we have. So Swaraj, I guess that explains the basic understanding. So let me know if there are any queries. We can take the question and thank you. So Varib sir, if you have any questions, request to type in the Q&A section. If you have any questions, request you to type in the Q&A section so that we can address your query right away. So Manoj, in the meanwhile, please, all the participants are requested to share your valuable feed. And if you have any question, request to type in the Q&A section. All the participants are requested to share your valuable feedback.
So Manoj, there is one question from Ramalingeshwar that is a very nice and clear, sir. I have a doubt. What's the Nifty lot size and margin required? Yes. So, Mr. Ramalinga Swamiji, for you, like you mentioned, what is the Nifty lot size? Nifty lot size is the same 50. और ये जो strategy हमने index का बताया है उसके लिए margin required would be around 1.25 lakhs. So that is the margin you need for the deploying all the 4 legs of the strategy. Yes, Manoj. Next question we have about the cement sector. Yeah, so I can see what about the cement sector in this series? Yes, we are expecting cement sector to do positive. The top pick, like I said, the stock of the month is Ambuja Cement, wherein we are expecting 14%. But other than that, we like ACC also. So ACC and Ambuja would be the top pick for this August series in cement as a sector. Yeah, Suraj, I think I can see a next question. I'll just see wherein Abhishek Nair is asking, could our research team provide futures trade in stocks as other broking firms are providing? Abhishek Nair, yes, and we are already doing that since the inception of research into relegate broking. I guess you need to please get in touch with your relationship manager because not only index futures, stock options, currency calls also are being given by the research team. Timely intraday positional as well. So kindly get in touch with your RM and just avail the facility because we have been providing the same every day in and out on not only the futures, also on index options. Thank you, Manoj. Yeah. Any other questions? Yeah, I can see one more question again from Mr. Ramalinga sir, wherein he asked, what about the defense sector? See, the major thing in derivatives, what we try to see is when the index goes up. Let me put it this way: if the Nifty is, let's say, correcting a lot, maybe 1,000 odd points, there would be the sector has to have weightage to hold the prices. So I don't think defense has got any high weightage into this index or into the derivative side. So fundamentally, there might be a story behind that, which I would not be the proper person to say. But as of now, from the derivative side, what about defense? We have no major cues on defense, rather FMCG, cement, select autos, and this would be the main sectors that we feel might outperform this series of August. That's what. Thank you, Manoj. Participants, if you have any questions, request to type in the Q&A section so that we can address your query right now. Manoj, I believe no more questions that we have in our Q&A section. So can we conclude the call right now? If anything, Yes, anything else would you like to add? Thank you everyone for joining in. Yes, Suraj, we can conclude this call.